हेलो फ्रेंड्स। सो MCQ इन माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड सेशन में लेके आई हूँ। इसमें हम इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंडोटॉक्सिन इज फॉल्स। सो एंडोटॉक्सिन एंड एक्सोटॉक्सिन्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। एंडोटॉक्सिन विद इन द बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस होती है और एक्सोटॉक्सिन जो है वो सराउंडिंग मीडियम में। सो एंडोटॉक्सिन से रिलेटेड फॉल्स स्टेटमेंट क्या है? So they are heat labile. First, protein polysaccharide lipid complex in nature. Action is often enzymatic. It produced by gram-negative bacteria. So correct option is C. Action is often enzymatic. This is the false about endotoxins. Next question, one of the following statement about exotoxin. यहाँ exotoxin के बारे में पूछा गया है कि exotoxin के बारे में false statement क्या है? Action is often enzymatic, have specific tissue affinity, are active in very minute doses, polysaccharide lipid complexes in nature. So option D is correct option. ये false है. Next, a state in which the organism persists in small number in tissues in the presence of immune state is known as. ठीक है, जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है और वह हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फाइट करता है, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज नोन एज premonition. Option C is correct. The next question, active immunity is not acquired by. So active immunity जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफ़र से जो है वो नहीं अक्वायर की जाती. दैट इज़ द पैसिव इम्यूनाइजेशन. पैसिव इम्यूनाइजेशन में हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ जो है वो पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं. ट्रांसफ़र फैक्टर इज़, ठीक है, ट्रांसफर फैक्टर क्या है? दैट इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट lymphocyte. So correct option is B. The next question is hapten. Hapten क्या है? Produces humoral response, bind to carrier to produce its effect, is high molecular weight protein, is the same as epitopes. The correct option is B. It binds the carrier to produce its effect. Next, the bond that binds light chain and heavy chain in an immunoglobulin is. So correct option is disulfide bond होता है इनमें, ठीक है, दोनों immunoglobulin chains में. Then in human sera, kappa and lambda chain occur in the ratio of. So correct option is 2:1. Next, which of the following is true? IgM fixes complement, IgG does not cross placenta, IgA binds mast cell, IgE binds phagocytes. So correct option is A. IgM fixes complement. Next, the concentration of IgE in serum is, correct option is D. Then which immunoglobulin can cross the placenta? So IgE is the antibody that crosses the placenta. मदर टू चाइल्ड जो है वो प्लेसेंटा में ट्रांसफ़र हो जाती है. द इम्यूनोग्लोबुलिन विद द लॉन्गेस्ट सीरम हाफ लाइफ इज, दैट इज़ द IgG. हीट लेबाइल इम्यूनोग्लोबुलिन इज, जो जल्दी हीट से किल हो जाती है, दैट इज़ IgE. द बैलेंसी ऑफ IgM इज, so it's 5. So correct option is D. Next question देखते हैं. The immunoglobulin which is produced first by the fetus in response to infection is, correct option is IgM. Which of the following is true about multiple myeloma? So antibodies produced are normal. It is a disease of monocytes. Immunoglobulin chains are either kappa or lambda chains. So correct option is C. Then the reaction of soluble antigen with antibody is known as precipitation. Soluble antigen और antibody का जो भी reaction होगा उसको precipitation कहा जाता है. Next, which of the following is true about prozone phenomenon? Prozone phenomenon is due to the disproportionate antigen and antibody level. Next is Coombs test is, it is a complement fixation, it is a anti-globulin test. Okay, anti-globulin test है ये. Next is Vidal test is a type of, so Vidal test is a type of agglutination reaction. तो ये साल्मोनेला टाइफी पैराटाइफी के लिए किया जाता है. Then an example of complement fixation
test is Wassermann reaction. Correct option is B. Which of the following is false about hereditary angioneuritic edema? So correct option is it is always non-fatal, इससे death नहीं होती. Rosette formation with sheep RBCs indicate functioning of T cells. Then next question, which cell causes phagocytosis? Macrophages. HLA typing is used in. Correct option is cases of disputed paternity. So HLA is the human leukocyte टाइपिंग. तो इसमें जो डोनर है और रेसिपिएंट है उनको चेक किया जाता है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए वो कंपैटिबल हैं या नहीं. नेक्स्ट इज MCH. Restriction applies to. So here the correct answer is antigen represented by macrophages to T cell. Primary immune response is mediated by. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो IgM मीडिएट करती है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर यूज्ड इन मैप्स यूज्ड इन इम्यूनोथेरेपी, immunological identification of cell and tissues, radio immunoimaging. So it is used in all the techniques. Next is anamnestic reaction is defined as production of heterologous but related antibody in response to antigen stimulation. So correct answer is A. The function of an adjuvant in a vaccine is antigenicity. Then cytokines 61. cytokines क्या होती हैं? cytokines are polypeptides. Next is interleukin 1 is produced by monocytes. interleukin 1 is primarily act किस पे करती है? lymphocytes पे. Then catechin is produced by. So correct option is macrophages. Passive transfer of cell-mediated immunity is mediated by. So mainly it is mediated by transfer factor. The most common immunoglobulin deficiency is of IgA. Which of the following is false about Wiskott-Aldrich syndrome? 67. So correct option is elevated IgM. Then Skulls-Dale phenomenon is a type of type 1 hypersensitivity reaction. Anaphylaxis is mediated by. So correct option is chemotactic factors. Next, which of the following is not a mediator of anaphylaxis? So correct option is heparin. Next question is reagenic immunoglobulin is. So correct option is IgA. So reagenic immunoglobulin वो होती है जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में जो पेशेंट्स के सीरम में एलर्जिक रिएक्शन में प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द Prosnist-Kushner PK reaction is used to demonstrate. So correct option is D, atopic hypersensitivity. Graves' disease is a. So correct option is type 2 hypersensitivity reaction. Next question, the type of immunologic response in post-streptococcal glomerulonephritis is. So correct option is type 3 hypersensitive reaction. The cause of immunity is enhance helper T cell function. तो T cell का जो function है जो enhance हो जाएगा वही immunity provide करता है. The graft taken from a cadaver is. Cadaver means dead body से, that is known as allograft. Graft versus host reaction is caused by T lymphocytes. Next, beside vaccine against tuberculosis, BCG is also used in. So BCG vaccine है वो किस में यूज होती है? Acute leukemia, remission of malignant melanoma, intradermal recurrence of breast cancer सबके cases में यूज होती है along with tuberculosis. The most common complication following blood transfusion are. तो
करेक्ट ऑप्शन इज इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है. RH एंटीबॉडीज आर डिटेक्टेड बाय using a colloid medium such as 20% bovine serum albumin, using red cells treated with enzymes such as trypsin, indirect comb test. So all the methods are used to detect the RH antibodies. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होके और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं. थैंक यू.